as you have heard, Sri Chaitanya Mahaprabhu, you can give your attendance also. So now, and we'll hear about holy name next 20 minutes, and then after that we'll chant again together, one round. So, as you have heard, Sri Chaitanya Mahaprabhu is combined incarnation of Radha and Krishna. So Krishna appear in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. So this is the pranam mantra of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is very, very magnanimous incarnation. Why he is very, very magnanimous? Because he have appeared to distribute love of Godhead. He appeared to distribute love for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So, and to distribute that love of Godhead, he have distributed the holy name of Krishna. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, one can develop his eternal love for Krishna. So now, Lord Chaitanya Mahaprabhu very elaborately explained in the 8 verses how by chanting Hare Krishna, one can re-establish his loving relationship with Krishna. In those 8 verses, named Shikshashtakam. Shikshashtakam, जो 8 अष्टकम है शिक्षा के, इस अष्टकम में चैतन्य प्रभु बताते हैं कि किस प्रकार हरिनाम जप करने के द्वारा, भगवान के नाम जप करने के द्वारा भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होता है और इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के दुख होता है वो समाप्त हो जाता है और उस भक्त को भगवान के प्रति प्रीति या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के कारण दिव्य आनंद प्राप्त होता है. तो so that Shikshashtakam 8 verses explain the different level of progress of spiritual path. And first verse speak about the effect of the holy name. What happens if somebody chants the holy name of the Lord? So in our previous week we have discussed about the first syllable, Cheto Darpana Marjanam. So if somebody chants the holy name of the Lord, then what happened to him? The mirror of the heart will become cleansed. So Cheto Darpana Marjanam. तो हृदय रूपी जो दर्पण है, जो हृदय को दर्पण के साथ, मिरर के साथ तुलना किया गया है. Now in current condition stage, our heart is filled with many contamination, lust, greed, anger, illusion, all these things, which is the cause of our entangle in this material world. But if somebody chants the holy name of the Lord, so his heart gets purified. His heart gets purified and he realizes his eternal position, his identification. He realizes his identification that I am not this body, I am not the enjoyer, but actually Krishna is the enjoyer. I am eternal servant of Krishna. So thus holy name purifies the heart, purifies the consciousness. So next slide. So in heart and the consciousness is purified, then what happened? Bhavo Mahadabagni Nirvapanam. So the nectarian rain of the holy name received from the spiritual master extinguishes the forest fire of material existence. So by the process of chanting, when heart is purified, Cheto Darpana Marjanam, so when heart is purified and one realizes that I am not Indian, I am not American, I am not Hindu, I am not Muslim, I am not doctor, I am not engineer, I am not black, I am not white. I am soul, part and parcel of Krishna.
and I am eternal. My life is not temporary. My body is temporary. My body is temporary. My relationship is temporary. But my existence in this material world is temporary. But I am not temporary. I am eternal, and I am eternal part and parcel of Krishna. तो भगवान के नित्य दास, गीता में जैसे कृष्ण बोलते हैं मामोई वांसो जीवो लोके जीवो भूता सनातना, तो जो आत्मा है, जीवात्मा है, मामोई वांश मेरा अंश है. किस प्रकार अंश है ना? सनातना, सनातन अंश है. तो इसलिए हमारा जो धर्म है वो भी सनातन है, क्योंकि भगवान सनातन है, आत्मा सनातन है, और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो भी सनातन है. और भगवान के साथ जो हमारा धर्म संबंध है उसको ही भक्ति कहते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं. तो मामोई वांसो जीवो लोके जीवो भूता सनातना, तो जीवात्मा भगवान के सनातन शाश्वत अंश है. और जब कोई व्यक्ति इस स्वरूप को one understand his identification, then what happens to him? Bhava mahadabagni nirvapanam. The struggle for the material existence, or the forest fire of the material existence extinguishes. So it is said material world is like a forest fire. So we have seen forest fire recently, like there was a forest fire in Australia, and so many animals died. So the whole Australian government, they spent lot of money to extinguish the forest fire, but they could not extinguish the forest fire. And it was such a huge loss for Australian government, and they has to make they organized some match of the old cricketer, like retired cricketers, to collect some donation. Yes, probably charity match. Yes, charity match. Yes, thank you. So to reduce that loss. So the point is that that forest fire, if there is a forest in the fire, nothing can extinguish that forest, that fire. So you cannot extinguish that fire just by some human endeavor or fire brigade. Correct? Can you extinguish forest fire by fire brigade? Yes, my question to all of you. Can you extinguish? No, sir. Yeah. So you cannot extinguish. So similarly, material world is like a forest fire. Everybody is suffering. And it is such a fire, nobody can stop. And the biggest example is current lockdown situation. The powerful example, this coronavirus, which has been spread like a fire all over the world. And nobody can do it. Nobody can stop it. The technology, money, intelligence, science, nothing can stop. Everybody is locked down and suffering. So many people, lakhs of people, millions of people died. So that is material world. And it kept happening every time, every moment of our life. Janma mrittu jara vedhi dukkha doshanu darshanam. So we may stop our suffering some extent. Like you have disease and you have taken the medicine and you cure your disease. But after some time there is another disease and ultimately death. So birth, old age, disease and death. So is there any medicine or any technology by which you can stop old age, which you can stop death, you can stop
old age, you can stop birth. So therefore, to stop the suffering, which is like a forest fire, we need a spiritual solution. Just like if there is a forest fire, you cannot stop it by the manual endeavor or the fire brigade. So only solution is rain. If rain take place, then only there is a chance that forest fire can be extinguished. So similarly, this holy name of Krishna or Krishna's mercy is like a rain. So when one takes shelter of Krishna, Krishna's holy name, so Krishna's holy name purifies his heart, purifies his consciousness, and gives intelligence, gives knowledge, purifies his heart, his illusion, and thus he come to his original identification, which is eternal. And thus it extinguishes Bhava Mahadabagni, Agni, Dabanal Agni, Nirvapanam, निर्वापित करते हैं. That's what we are asking many of you that how we are जब chanting के बाद कैसा लग रहा है, and most of you are saying that peaceful, relieved, satisfied, and then sincere, though means the old devotees is very happy. So why happy? Because Bhava Mahadabagni Nirvapanam. Because it extinguishes the forest fire of the material existence. So even you may not understand how it is working, but because this chanting is like absolute, is complete, therefore it does not require the qualification of a chanter. Does not require the qualification of the chanter. Anyone who comes in contact with the holy name can elevate him. Holy name can remove all his illusion. So Bhava Mahadabagni Nirvapanam. So this is the second effect of chanting. अगर कोई भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की आश्रय लेते हैं, भगवान उनके सारे दुख जो होता है, इस भौतिक जगत के जो संघर्ष है, भौतिक जगत के जो दुख हैं, उसको खत्म कर देते हैं. तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा. तो हम लोग किस लिए दुख पाते हैं? तो अलग अलग कारण से अलग अलग कैटेगरी के दुख मिलते हैं हम लोगों को, और अलग अलग कारण से दुख आता है. तो एक पहला नंबर है, हमारे जो दुख हैं वो निर्भर करते हैं कि किस प्रकार हम चीज को देखते हैं, किस प्रकार हम लोग हमारे नजरिया किस प्रकार का है. फॉर एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है. तो सपोज भारत हार गया. तो अगर भारत हार जाता है तो भारत के लोगों को बहुत दुख मिलता है, और उसी मैच ही पाकिस्तान के लोगों को बहुत आनंद देता है. तो एक ही मैच है, लेकिन नजरिया के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि दुख का कारण है ना सुख का कारण है. तो और एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि सपोज किसी को गोली लगा है. अगर किसी को गोली लग जाता है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दुख देता है. और उनको लगता है कि नहीं, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं. लेकिन वही गोली जब किसी सोल्जर को लगता है, उनको दुख होता है, लेकिन उसमें उनको बहुत गौरव अनुभव होता है, उनको हृदय से बहुत संतुष्टि अनुभव होता है, और बाकी लोगों को भी बहुत गौरव अनुभव होता है. नहीं, पूरे देश के लिए उन्होंने
हाँ इतने रिस्क लिया है। तो उसी प्रकार जब हम लोग आत्मा इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की भोग करने की इच्छा करते हैं, when somebody see this material world or the material object is the source of his enjoyment, then he suffers. So Krishna speaks in Bhagavad Gita, Janmo mrityu jara vyadhi dukkho doshanu darshanam मामू पेतो पुनर्जन्म दुखालयम अश्वाशतम। कृष्ण ऑलरेडी इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर टैग लगा दिया है, स्टैंप लगा दिया है, हाँ दुखालयम। जैसे आप किसी मेडिसिन शॉप में जाते लिखा है औषधालय, किसी स्कूल में जाते तो विद्यालय, हाँ किसी मतलब खाने की दुकान में जाते तो भोजनालय, हाँ तो भोजनालय भोजन मिलेगा, औषधालय औषधि मिलेगा, और विद्यालय में विद्या मिलेगा। दुखालय में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यस आंसर। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। हाँ तो जब कोई व्यक्ति शास्त्र को जानते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको पता है कि भौतिक जगत दुखदायी है, और इसलिए कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता। व्हेन योर एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई एंड यू डोंट गेट इट, देन यू सफर मोर। And this expectation is high in ignorance, in illusion, because you don't know the reality. So as soon as you know the reality, by the help of scripture, by the help of devotees, you understand this is the reality. And therefore, the suffering does not give suffering. Understand? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, भक्ति के पाथ में आता है, तो उनके दुख नेचुरली, एक्चुअली दुख बॉडी में नहीं होता, दुख माइंड में होता है। क्योंकि बॉडी तो डेड बॉडी है, बॉडी तो डेड, इट इज अलाइव बिकॉज सोल इज प्रेजेंट। बॉडी इज डेड, एक्चुअली डेड मैटर, मैटर से बना हुआ है। आत्मा शरीर में रहने के कारण उसमें जान है। तो लेकिन जो व्यक्ति भौतिक चेतना में रहते हैं, वो हमेशा हम दुख पाते हैं, मन में दुख पाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लेश। बट व्हेन समबडी बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड बाय द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, बाय हियरिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, his mind is clear, mind have clear understanding, intelligent have clear understanding what is the reality of this world, why people are suffering, what is the cause of suffering. You understand my point? I'll be happy if you yes, sir. Just and naturally he don't feel this pain. So this is the first category. Second category is first point I spoke, the material world is a forest fire, okay, and forest fire can be extinguished only by the rain. So similarly, material world is like a forest fire, and by Krishna's mercy, by chanting Hare Krishna, our heart gets purified, and we become situated in our eternal position, and then the Bhava Mahadabagni, the suffering for the material existence goes away. Second point I spoke, that how we see इस दुनिया को या अलग अलग वस्तु को किस चेतना से हम लोग देखते हैं। भौतिक चेतना में देखेंगे तो और दुख पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक चेतना से देखेंगे और इस भौतिक जगत की स्थिति को हम लोग समझेंगे तो हमारा दुख चला जाएगा। तीसरा है, द थर्ड रीजन ऑफ आवर सफरिंग इज आवर अटैचमेंट। So when somebody is attached to some material things, and then when that material thing somebody loses, then he suffers. Suppose किसी का धन खो गया, या किसी का मोबाइल खो गया, या किसी का कोई भौतिक वस्तु खो गया, तो उनको बहुत मतलब दुख होता है। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा उनको दुख होता है। इस भौतिक जगत का लक्षण है आई एंड माइन, मैं और मेरा, अहम मामेति,
मैं शरीर हूं और शरीर के साथ जो भी चीज रिलेटेड है वो मेरा है, हाँ? और मेरे सुख के लिए, मेरे भोग के लिए बना है. That is the psychology of the people of this material world. Every one of us, we are affected by that. So when we develop material attachment, that we consider that this belongs to me, and when that is lost, then we suffer. So, but if we transfer our attachment, to Krishna, if we transfer our attachment to Krishna, then will not suffer. So how can transfer our attachment to Krishna? By chanting Hare Krishna, we can transfer our attachment to Krishna. By hearing from scripture, we can transfer our attachment to Krishna. We can understand that everything belongs to Krishna. Krishna speak Bhumi Rapo Analo Vayu Kham Mano Buddhi Re Bacho. Bhumi, Jal, Agni, Vayu, Akash. इस भौतिक जगत में जितने भी उपादान है, जितने भी वस्तु है, किसने बनाया है? Who is the creator? Who is the creator? Are we the creator? We are not the creator, and Krishna is the creator, and therefore Krishna is the proprietor. Krishna is the proprietor, correct? So, yeah, he's saying Krishna is a seed-giving father. So Krishna is the proprietor. Krishna is the creator, and therefore Krishna is the controller, and Krishna is the enjoyer. But when we put ourselves as an enjoyer, we put ourselves as a proprietor, we put ourselves as a controller, then what happens? We become attached. And material world, everything is temporary. Our body itself is a temporary. And naturally everything is temporary. But when we think that I am the enjoyer, I am the boss, and we become attached to all those things, and then we suffer more. And therefore the material attachment is the cause of suffering. But if we transfer our attachment to Krishna, who is worthy to be attached, who is the object of our love. So when we become attached to Krishna, and we understand that everything belongs to Krishna, my money belongs to Krishna, my home belongs to Krishna, my family members belongs to Krishna, my post, position, everything belongs to Krishna, because Krishna is the origin of everything, and I am eternal servant of Krishna. And naturally you become happy, and whatever you have, you take care of those things because it is Krishna's property. But devotees are not like Krishna का है, ठीक है, पैसा जाएगा, बाइक जाएगा, मोबाइल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, अल्टीमेट तो कृष्ण का है. That is also illusion. If it is Krishna's and I am Krishna's servant, then what should be my consciousness? I should take care of that. And we are give our best to take care. So here we are taking care of that, but attachment is not there. You understand? Very, very, very sweet process. Bhakti is very sweet and very, very knowledgeable. And third thing is why we suffer. Because of our consciousness, हमारी चेतना के कारण हम लोग दुख भोग करते हैं. एग्जाम्पल के तौर से देखा जाए, सपोज आप गर्मी के समय बाहर में धूप में हैं, आपके कॉलेज के आसपास, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास बहुत पॉल्यूशन है, गंदा चीज है आसपास में, हाँ, और गर्मी के समय बहुत पसीना निकलता है, बहुत गर्म होता है. तो उस गर्मी के समय अगर आप एसी रूम में घुस जाते हैं तो क्या होगा? आपको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत शीतलता का अनुभव होता है. लेकिन एक चीज सोचिए, आप एसी रूम के अंदर गए, हाँ, लेकिन बाहर की गर्मी जो है वो क्या बंद हो गया? बाहर का गर्मी जो है वो क्या बंद हो गया? बाहर का गर्मी जैसा था वैसा ही है.
You came inside the AC room, correct? तो उसी प्रकार जब हम लोग, हमारी चेतना भौतिक रहता है, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, एंड आई एम द कंट्रोलर, और उसी प्रकार की चेतना से, उसी प्रकार एटीट्यूड से हम लोग हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी प्रकार मेंटालिटी से, तब क्या होता है, उनको अंदर और बाहर दोनों तरफ से जलन होता है, दोनों तरफ से वो जलते हैं। इसलिए भवो महादाबाग्नि कहा गया है। पीपल दो चीज होता है, एक है चीता और एक है चिंता। तो चीता तो मुर्दा जलता है, लेकिन चिंता जिंदा लोगों को जलाता है। तो material world people are suffering because of their desire to enjoy separately from Krishna, and our attitude is material। लेकिन जब हम कृष्ण की चरणों की आश्रय लेते हैं, कृष्ण के चरणों की आश्रय लेते हैं, तो हमें शीतलता मिलता है। कृष्ण गिव रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। भवो महादाबाग्नि निर्वापनम। So therefore, we have to take shelter of KC। आप एसी में घुस सकते हैं, लेकिन जब भी बाहर निकलेंगे तभी आपको हीट मिलेगा। लेकिन अगर आप केसी का शेल्टर लेंगे, केसी मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज केसी। चैंटिंग हरे कृष्णा इज एसी, केसी, रियल एसी। तब कृष्ण की चेतना में रहेंगे, कृष्ण की आश्रय लेंगे, तो तब आपको हर परिस्थिति में आनंद मिलेगा, हर परिस्थिति में आप सुखी रहेंगे। We see the pastime of Prahlad Maharaj. His father given so much trouble because he was practicing spiritual life. But प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ? प्रहलाद महाराज को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, जलते हुए अग्नि में घुसा दिया, हाथी के नीचे डाल दिया। But Prahlad was remembering Krishna, and Krishna was protecting him, and he was not in difficulty। कृष्ण बचाएंगे कि नहीं, कृष्ण बचाएंगे, हाँ कृष्ण बचा दिया, हाँ कृष्ण बचाएंगे नहीं, और कृष्ण बचा दिया। He was not in tension, rather neither he was praying to Krishna that Krishna please protect me। He was fully confident that Krishna will protect me। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। That is Prahlad consciousness, and therefore he was fearless। Devotees are fearless because they have taken shelter of Krishna, and that is the power of bhakti। Therefore devotees are not suffering। Prahlad was not suffering, Pandavas are not suffering, they were given so much trouble, but they are not suffering because they knows that I am going to right path, and Krishna will take care of me। And we see how Krishna took care of them। And Pandavas are not difficult। कृष्ण बचाएंगे कि नहीं, कृष्ण बचाएंगे कि नहीं, अरे कृष्ण का नाम जप करूं कि नहीं करूं तो बचाएंगे कि नहीं। They are not doubt। They are fully aware of this transcendental life of bhakti। Bhakti is a transcendental life, dynamic life। Even in great difficulty they don't suffer। Suffering is inevitable in this material world। Suffering is inevitable in this material world, but the devotee don't suffer even a great calamities। What to speak of Krishna, who provide everything to his devotee? Devotees are therefore always happy by taking shelter of Krishna। So the best process of taking shelter of Krishna is chanting Hare Krishna in the association of devotees। Krishna's name is not different from Krishna। Krishna is fully present in his name, and everything belongs to Krishna, everyone belongs to Krishna। So therefore this chanting Hare Krishna is not some sentiment कि गरीब लोग भिखारी लोग chanting करते। That is ignorance। So chanting is topmost spiritual process। That's what Prabhupada says, 99% progress in our spiritual path coming from the chanting of the holy name।
So therefore we have to realize that how holy name, by chanting holy name, one becomes happy. And Bhava Mahadabagni Nirvapanam, the fire of the material existence extinguishes. So therefore, more we should chant Hare Krishna. More you chant Hare Krishna, more you become happy. More you take association of devotees, more you attend the courses, more you become happy. Like your Utkarsha course is coming. So more you know about Krishna, more you know the science of Krishna consciousness, science of spiritual practice, and you apply in your life side by side of your studies, you become very elevated personality. You become very happy, joyful, and you have clear idea about life, clear idea about the whole function of this creation. And thus you make your life perfect. So thank you very much for hearing attentively. So now we'll chant Hare one round at least. So are you ready? Hare Krishna. So all of you are ready for chanting? Yes, sir. Rishi, Rupam, Sanjeev, Shivam, Subhamay. Yes, sir. So are you inspired by today's discussion? Yes. Yes, sir. Others? Anurag Kohli? Hare Krishna, Anurag. हरे कृष्ण सर. Yes, आपने सुना डिस्कशन? हाँ सर. तो आपको अच्छा लगा? हाँ? हाँ सर. धीमा आ रहा है आवाज, सुना नहीं लग रहा है. अच्छा लगा. So please take inspiration. Now, so can we start chanting? Yes, sir. Okay, so we start. Akshay, we start. So I'll chant Jai Sri Krishna mantra. So Jai Sri Krishna Chaitanya mantra one time and Hare Krishna Mahamantra 108 times. So if you have not chanted 2 rounds, so you can chant 2 rounds after second round, after 1 round with Akshay. Jai Sri Krishna Chaitanya. जय श्री कृष्ण चैतन्य. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Advaita Gadadhara. Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. So you can unmute yourself, everybody, and we'll chant together. And you can reduce the volume of your mobile phone. We'll chant together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare